Welcome to Coffee Conversations, which is an initiative by Namir Virani, Ankita Jain, and Mansur Chakra. Coffee Conversations, where Yeah. we have on different teams every Thursday at 6 p.m. with industry experts. Today's theme is design hacks. To copy on you, fun and learning by us. So I'll let you brief about our platform, the Emerging India Platform, TIF in short. It's an initiative where we aim to build a powerful knowledge sharing and learning under Skill India, a business ecosystem for sharing tips, discussing challenges, success stories, and networking with other like-minded individuals. This initiative is supported by Lions Club of Mumbai Shining. So let's begin our conversation for today. Our guest, Gaurav Gupte, is with us. He is the director of Go Communications, a fast growing digital marketing and training agency with offices in Mumbai and Bangalore. Gaurav has over 10 years of experience in marketing and branding. He has handled marketing and online strategy for companies in the food and beverage, FMCG, consumer durables, banking and finance, travel and e-commerce, public personnel, not-for-profits, education in the hospitality sector. So over to you, Ankita and Mansoor, to start our topic conversations with Gaurav. So Gaurav, we have 13 people watching us live right now, and we have various questions to be asked from you. I would like to ask you to explain your journey. How far have you reached in your career, and how successful were you? Sure. So, Go for it Communications, my company, I started it in the year 2017. So, one of the biggest motivations for me in life has been how do I do the things which are attractive to my mind. And design is something which I'm always attracted to. I love writing poems. I love experimenting with new art and architecture, just so that we keep getting new ideas. How do we push ourselves to come up with new designs? I mean, am I supposed to just wear the same kind of t-shirts always? Am I supposed to just wear the same kind of formals always? So what about the new ideas? Where do we get these new ideas? And I felt that design is something which will push me ahead to come up with new ideas and get new ideas. So advertising is just one part or one facet of my personality, but design is something which I want to, keep exploring. So with respect to advertising, I believe that sky is the limit. Advertising has been there across the world for decades. You can even say probably a century. But the point is that how do you help your clients do better? And at the same time, how do you put a smile on the faces of your customers, even if they don't want to spend today? So these are the two things which I always focus on when thinking of design. My customers should smile when they look at my designs, and my clients, they should smile when they look at the revenues. Great. All right. Mansoor, you have? Yeah. So Gaurav, our whole theme is known as design. So when you particularly choose something for your client, or when you're planning to make a design, what are the first few steps that you keep in your mind before making the design? Be it respective of any kind. Yeah. Yes. Go ahead. So whatever the industry is, whatever the product is, and whoever the consumer may be, the first point is that your design should be so simple that even a school kid should be able to understand it. Right. Because the bottom line is when you advertise, everybody right from school-going children to retired adults, everybody was going to watch that ad. So it should be very, very easy to understand. Second point is your design should be so simple that it should explain itself even if there are no words in that advertisement. I mean, everybody remembers the Feviquick ad where
there's a fisherman who puts 3 to 4 drops of Fevikwik on his stick, and he just dips Yeah. it in Yeah. water, and he gets fish, right? I mean, that is an ad of the 90s, and you still remember it, right? So that's how simple your design should be. That's how simple your idea should be. So these are the things which are very important. And the third point, if we delve deeper uh, into the design specific, try to use colors that are soothing to your mind. The colors blue and green, they are considered to be calm colors, cool colors, and they are more acceptable to the eye as compared to hot colors like yellow, orange, red. You know, not Right. to say that you should not use these colors, but try and balance out your design in such a way, right? Okay. Exactly. So it was a great tip for the audience, right? And so, Yeah. do you have any kind of specific colors that all are like your go-to colors, Gaurav? Like any of your specific, like you always use those colors in your designs. Any personal favorite? It really depends. It really depends on one, what is the product. So also it depends on what age group am I appealing to, and Okay. also where is that person present. So am I appealing to a corporate, a CEO who's going shopping at that moment, or am I appealing to a CEO who's sitting in his office? Because a CEO who's sitting in his office is only going to look at the benefits that the product is going to get him. He's going to be a no nonsense guy. But if you look at a person who's sitting in the mall, he's looking for some entertainment. Everybody is looking to break the monotony. So some colors that break the monotony, definitely yellow, red, blue, green. These are some of the safest colors to use in your advertising. Okay. Could you repeat that Exactly. one more time so our viewers can like get that and write it down? Repeat the colors back again. Yellow, red, blue, green. They are some of the safest colors to use in your advertising, and you can't go wrong with these. Okay. All right. Exactly. So, what's the interesting moment in your life? Any moment in your designing? The aha moment that we can say? Right. I think one of the biggest influence that has been on my life has been the advent of social media, because before social media, if you see, the only kind of advertising which has been around has been your television, print, radio, and when we look at the year, look at the years between 2015 to 2020. Now that is when we realize the amount of advertising that is really available. Before that, it was just TV ads. And now when you think of all the ads that you see on a mobile phone, you understand the importance of being to the point. Hmm. If you're not to the point, you're just one amongst the many. So it is this learning which I take from social media, that your design has to be simple. And which is why I always try to limit my ad to less than 5 words. That is the target which I keep. Less than 5 words. If you can't explain it in 5 words, And now then you're when you really think of not all the making an ads that impact. you see on a mobile phone, you understand the importance of being to the point. All right. That means you mean to say कि we have to limit text as compared to the graphics. Graphics should be more. Exactly, exactly. It is a proven research that when our brain works, it's easier for our brain to first look at a video and understand it. Why? Because you're looking at the video, you're hearing the sound, so you're not really stressing your mind. But when you look at an image, you have to make some effort to understand what is in that image, what is going on. And then if you have to just read text, you have to read the text, you have to visualize it in your head as to what is being said in this text. So you're putting your brain to work. So if there is less text, it's much easier for our brain to understand what this product is about, and it's easier to remember. I mean, I just quoted the Fevikwik ad, and it got a smile in everybody's face. Right. So that's the example we can have. Right.
Okay, and one more thing. Actually, what happens when the ad completes now? उसके बाद भी after 2 minutes we have to think what was the ad exactly about. Exactly. There are so many ads we see today, and we are like, okay, what was it about? What is going on? Seriously, I mean, sometimes I think the IPL is coming up right now, and there'll be many ads which you'll see right now where you'll be like, यार ये ad को बंद करो यार, बहुत पका हुआ है. Every IPL we have that. Okay. And Gaurav, just one more thing to add in that. So, do you believe like we have a lot of questions that talk about color psychology, right? Like they say different colors impact people's minds in a different way and all that. So, what is your take on that? How true is that supposed to be? It's 100% true, and the reason why I said green is good is because from our childhood we have been seeing traffic signals. Red is stop, yellow is slow down, and green is go. So if you want anybody to take a good decision in your favor, the brain is wired to take a decision when it sees the color green. So that's something you can't change overnight. I mean, that you have been seeing for the last 15, 20 years. You don't change that overnight. So that is why, the color green is very helpful for that. That's the reason why there is a research which has happened, and that there is this research which has said that our brains have just been hardwired into that. So the color red, it signifies danger. Anywhere you see, I mean, even in movies, if you see, I mean, the skull and bones symbol, it's most of the times in red. Even if you see, the electricity board, which is there in our homes, in our buildings, the skull and bones symbol is in red. Right. So it's just that we are now used to seeing those things so many times that we associate those colors with our actions. Red is stop, orange slow down, green is go, good to go. Okay. So like it's already been hardwired in our minds, so that's why we understand the color language much more better. Right. Exactly, it's in our subconscious now. It's in our subconscious now. Yeah, well, that's a really good example. Yeah. No one would have thought about it. Traffic signals, red, very wonderful example. Yes, absolutely. Okay. And then secondly, I want to ask you, like, suppose someone like wants to get into the design field or wants to start his own firm or something like that. During these times, what is like your take on it? That what he or she should go to? Someone wants to get into designing or wants to start a firm. So, like, what would be your take? Exactly. I'll just answer that. So, with respect to design, there are multiple things that a person can do. He can become a photographer. He can shoot videos. He can, just become a graphic designer, like the ones who are hired by advertising agencies. So there are different softwares and there are different skill sets needed everywhere. Although these skill sets overlap with each other, there are different distinct skill sets which every person needs to have. And to do that, you should first learn these skill sets. You can easily learn these on YouTube. It's quite easy. And by learning these on YouTube, you can simply go online. There are many freelancer websites where you can go, you can create your account, and you can simply start freelancing. You could start with as low as maybe $5 for one project. You could go, slowly scale up to say $50. As you keep getting more projects, you can simply hire somebody over the internet again. Now, this is one of the safest ways to multiply your client and also to build a loyal client base. Because once a person is very confident that, okay, I'm very happy with the kind of work, say, Gaurav is giving me, he will stop thinking about what kind of design do I have to do. He'll just consider you as a partner. Okay. And that is invaluable. Once you build trust with anybody, you can easily scale up the number of clients you have, and that's one of the simplest way to begin and grow your business. But Gaurav, this is a very competitive field, every day changing. Agree. What to say? Absolutely. So, all I can say is beauty lies in the eye of the beholder. If your design is good, people will love it. They'll come to you again and again and again.
Today, we all think of the Ogilvy, BBB Mudra, and Publicis Group, massive advertising agencies. But is it that only these companies are doing well? Are these the only advertising companies in the world? There are many other companies in India which are doing a good amount of turnover, more than 100 crores, and we have not even heard of them. Why? Because say they are based in non-metro cities. They are based in smaller cities. Does that mean that they are not doing good work? Does that mean that their work is ineffective? Absolutely untrue. It's that there are many companies which are not headquartered in these metros who are working with them for 50 years, and they're just so happy with them that they are continuing. They don't even need to look outside. That's proof that you don't really need to worry about the competition. If your design is good, people will come to you. I mean, the best example is in this lockdown, there are so many YouTubers we see. There are so many people whose blogs we have read. And we are like, wow, this guy is really good. Where was he all the time? This girl, her tips about cooking, or this girl, her tips about design, or this girl, her tips about life in general, they are just so amazing. Where was she all this time? She was there all the time. It's just that you have not seen that. You just have to open your eyes and look around, and you'll be there. That's there. Great line. Great line. Yes. So, yes, Mansur. So, Yeah. So Gaurav, it was nice having you on the live. It's really Thank you amazing so the much. deep knowledge that you have given us. And we'll surely ask other people to get back with the questions. You stick around. We're having another guest also who's coming up. All right? I think Thank just you. one question somebody has There's posted one in the question. comment Yes, box. someone has asked Yeah. a question. Yes, go ahead. Yeah. go ahead, answer, Gaurav. Just I'm not able to see that. I think it's scrolling too fast. If Can you can see, just Mansoor or Ankita, can you repeat the question for Gaurav? Yeah. Hey, this is Lisa, and can I please ask a question? What are the chances or scope we opt designing as our career option? Okay. Thanks for the question, Lisa. I think we just spoke about that, and yeah, there is unlimited scope. So no matter what the technology comes to, your designing is all about your creativity. There's no technology involved in it, so it's all in your brain, and sky's the limit. So thanks a lot. All right. Thank you. Thank you, Gaurav. Stay back So thank for you so much. further questions. You can answer them in the chat session. How do we invite the guests? So, Gaurav, I think so you'll have to. Yes, I'll just 1 second. I'll just. Yeah. Thank you so much, Mansoor. Thank you so much, Ankita. All right, thank you. Thank Bye. you so much. It was wonderful Yeah. having you here. Yeah. Thank you, Gaurav. Thank you. Stay back and enjoy next speaker, Krishna Vasani. Welcome, Krishna. Yeah, hi. Jai Shri Krishna. Hi, Hi, Krishna ji. Jai Shri Krishna. Yeah, welcome to Coffee Hello. Conversation. We have Mansoor, Ankita with us. Ankita, Yes. introduce Hi, Krishna. hi Ankita. Hi. Hi, Hi, Krishna ji. Thank you Hi. for coming on this call. We have 11 people seeing us right now live. So I will just introduce with you. So Yeah. people, this is Miss Krishna Vasani. She's the founder, creative head of B18 Animation Studio. And she is an entrepreneur with animation expertise in 2D, 3D and visual graphics. And she has an experience of over 9 years. And she has graduated from Maya Academy of Advanced Cinematics. She does branding creative, social media creative, website designing, UX, UI, and creative challenging designs. And she's also been awarded with the Nari Ratna Puraskar from Sanik Bharti Humanity Foundation in the field of IT and animation. So this is a great achievement, Krishna ji. Thank you so much. Yeah. So Mansoor has some questions to ask from you. तो कृष्णा जी Yeah, हम ma'am. सबसे पहले आपकी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे इतना सब कुछ कैसे हाँ, 1 minute. हाँ, बताओ. Sorry for interruption. नो प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम जी बोलिए. Mansoor, repeat the question. Repeat the question. बताइए हमें हाँ, please repeat your question. मैं out of. मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी बताइए आप एनिमेशन में कैसे गए
या इट इज ग्राफिक्स वेरी में? इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ओके। मैं तो बेसिकली स्केचिंग और पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। Okay. थी, मैं भी याद थी। बट मेरे स्केचिंग्स ज्यादातर कार्टून के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते, लाइक कार्टून ज्यादा मैं बनाती थी, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते थे। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग नो बेस, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ही नहीं आता था। सो आई स्टार्टेड आफ्टर माय मैरिज, आई स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर्स। एंड पेंट पे मैं कुछ नो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाती थी, जो कि काफी पसंद करते थे लोग। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड लर्निंग 2D एनिमेशन, देन 3D एनिमेशन एंड VFX स्पेशलाइजेशन। मीनवाइल मैंने फिल्म मेकिंग का भी डिग्री लिया। एंड देन 2009 में आई हैव started my partnership in firm, and after 2 years I started my own studio, animation studio. Yeah, Well, but nice. it is quite interesting. I'm learning day by day, and I'm still learning every day. It's not really inspiring story. हमारे पास एक क्वेश्चन आया नीचे, किसी ने पूछा है कि कोई गुड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है जहां से हम सीख सकते हैं? डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे हैं। पहले आपको ये तय करना चाहिए मेरे ख्याल से कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। लाइक काफी मल्टीमीडिया नो स्टूडियोज भी होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको डिजाइनर्स की ही जरूरत रहती है। काफी सारे जैसे हमारे यहाँ पे डिजाइनर्स को हम हायर करते हैं, तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि क्या वो सीक्वेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या सीक्वेंस को बना सकते हैं, क्या लाइक स्टोरी बोर्डिंग काइंड ऑफ। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका स्किल सेट कैसा है, उस अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिलेक्ट करके फिर उस इस टाइप के इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। लाइक अगर आपको एनिमेशन फील्ड में जाना है, ग्राफिक्स बहुत जरूरी है, बेसिक है वो, तो वहां से सीख के आपको अगर एनिमेशन फील्ड में जाना है तो आपको एनिमेशन इंस्टीट्यूट में जाके ही ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पे उस लेवल का आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जबकि अगर आपको सिर्फ डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको अगर मतलब आपकी इनबिल्ट स्किल्स हैं, तो आपको वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब है, आप काफी सारे रिसोर्सेस है आजकल, सोशल मीडिया फ्री अवेलेबल है, काफी सारे टूल्स एंड काफी सारे एप्स अवेलेबल है, आप वहां से भी अपने आप को डेवलप करके कर सकते हो। या थैंक यू। तो आपके हिसाब से 2D एनिमेशन अच्छा है, 3D एनिमेशन अच्छा है, विजुअल इफेक्ट्स अच्छा है? See, my personal favorite is 2D animation because वहाँ पे ज्यादा स्कोप रहते हैं। स्कोप इन दैट सेंस कि आपको कलर्स बहुत मिलते हैं। 3D में भी अवेलेबिलिटी मतलब आप कर सकते हो, क्रिएटिव है तो, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल नहीं है इतना। बट 2D में आपको बहुत सारे स्कोप मिलते हैं। लाइक अगर मुझे एक महीने के अंदर 3 भी डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम दैट 3 प्रोजेक्ट्स। और 3D में ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट करते करते ही 6 महीने निकल जाते हैं। सो आई पर्सनल, मेरा अगर आप पूछ रहे हो तो यस, मुझे 2D ज्यादा पसंद है। बट हालांकि मैंने 3D में और VFX में ही ज्यादा काम किया है, AR में भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हम 3D ही ज्यादा यूज करते हैं। But 2D is much, quite interesting, I would say. ओके। आपका कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट डिजाइन करते करते आपने कुछ डिस्कवर किया? लाइक यू वर पेंटिंग, आप शुरू में सिर्फ पेंटिंग करते थे पेपर पेन पे, वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितना आपको टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितने एफर्ट्स लगे, कितने साल लगे? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। स्केचिंग और पेंटिंग तो मैं खैर बचपन से ही करती थी, लेकिन जब मैंने एनिमेशन लर्निंग स्टार्ट किया वो कुछ 2003 और 4 में स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद 10 साल तक मेरा सिर्फ लर्निंग का ही जर्नी था। मैक्सिमम टाइम में अपना लर्निंग में ही जाता था। बट उस टाइम पे मैंने सब चीजें एक्सप्लोर की है। लाइक नॉट ओनली डिजाइनिंग, स्केचिंग पेंटिंग तो मुझे आता ही था। मैंने उसके बाद डिजाइनिंग एक्सप्लोर किया,
उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग का भी काफी काम किया, काफी स्टूडियो से मैं अप्रोच करती थी प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, उस पर भी काफी सारा काम किया। इसके बाद मेरा जो जर्नी मेन जर्नी था 2D एंड 3D एनिमेशन का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जहां मैं स्टडी करती थी, मैंने मैक्स से सीखा है और इट्स अ वेरी वहां पे जो फैकल्टीज होती हैं वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं आपके काम में, आपका असाइनमेंट्स में। सो वहां पे आपको डेली बेसिस पे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो जो ड्यूरेशन था मेरा लर्निंग का, जो टाइम था, वीएफएक्स मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, उसमें भी मैंने काफी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद भी तो और इंटरेस्टिंग था जबकि मैं जब खुद का स्टूडियो चालू किया और काफी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में आते थे, क्योंकि मेरा जर्नी बहुत लंबा था। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ था, तो मैं हर चीज को अप्लाई करना चाहती हूँ। तो कभी 3D प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो मैं सोचने 2D एंगल से भी सोचने लगती थी, 3D एंगल से भी सोचने लगती थी। सो मल्टीपल चीजों को अप्लाई करने के लिए वो जो एक आर्टिस्ट होता है जिसको अंदर से ही भूख रहती है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, तो वो मुझे मौका मिला। तो ये जर्नी भी मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक्साइटेड रहा, लाइक एनिमेशन स्टूडियो अभी तक का भी। ठीक है मैडम, एक बट ये फील्ड ही ऐसा है कि अगर आप एक बार अंदर चले जाते हैं तो फिर आपको बाहर निकलने को बाहर कोई चाहिए ही नहीं। लाइक फील्ड के अंदर ही आपको इतना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती हैं। यस, आप कुछ पूछ रहे थे मन से? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपने फिर वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे किया, ये जरूर पूछना है। बहुत ही ये बहुत जरूरी होता है इसको करना। मेरा जो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली बहुत छोटी थी। मतलब मेरे इन-लॉज हमारे साथ नहीं थे और मेरे हस्बैंड का भी जॉब ऐसा था कि 9 to 9 का जॉब था, तो उनको भी लाइक इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे परेशान करने के लिए और ना मुझे इसको परेशान करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता था। सो उस तरह से बैलेंस हो जाता था। मेरा एक बेटा था, वो भी अपने आप ही अपना स्टडी को देख लेता था। सो आई वॉज वेरी लकी इन दैट सेंस कि मैं बहुत इतना साल पढ़ने के बाद भी मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे मेरे करियर के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है, कभी नहीं लगा। या यस। अगर हम देखें कृष्णा जी, तो अभी ट्रेंड ना हर हफ्ते बदलता है। तो आपके हिसाब से एनिमेशन ऐसा फील्ड हो गया कि जिसमें लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होती है, एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। कभी आपको एक मोमेंट ऐसा आया कि यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं था, ये कुछ नया आया है, चलो ये देखते हैं? या मुझे सच में ये एक बार हुआ, एक बार नहीं, जब भी मेरे हाथ में असाइनमेंट्स आते तो मुझे होता था, मैं स्केचिंग करती थी, लेकिन मैंने जैसे बोला कि लाइन ऑफ स्केचिंग जो होता है जिसको हम स्टोरी बोर्ड बोलते हैं, वो मैंने कभी नहीं किया था। सो ये मोमेंट मुझे हमेशा मैं जब अपने पास कोई असाइनमेंट्स आते हैं और मुझे वो अभी मुझे सच में बोले तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपनी लर्निंग पे इतना टाइम स्पेंड करूं कि मैं अभी स्टोरी बोर्ड भी सीखूं, ये टाइम नहीं मिलता है। तो यस, ये एक चीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि स्केचिंग इज नॉट आप एक दिन में या 2 दिन में नहीं सीख जाते हैं, सालों लग जाते हैं आपको सीखने के लिए। और ये जो स्टोरी बोर्डिंग होता है वो ऑब्जर्वेशन से आता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद आपको काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके वो एक्यूरेट रिजल्ट आता है उसका। सो यस, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे काफी काम अभी भी करना है। यस। वन मोर क्वेश्चन आई हैव, आप कौन से प्लेटफॉर्म पर एनिमेशन करते हो? विच टूल, विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर दैट? बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हम लोग, मैं एक सेक्टर में नहीं हूँ, मैं बहुत सारे सेक्टर में काम करती हूँ। लाइक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है तो उसके लिए काफी सारे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। 2D एनिमेशन है, वहाँ पे बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, टून बूम है,
बहुत सारे 2D एनिमेशन के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। 3D मैंने जो सीखा है, मैंने माया और मैक्स पे ज्यादातर सीखा है, तो हम उसी के ऊपर ट्रेन करते हैं लोगों को और उसी पे हम ज्यादा काम करते हैं। मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, हम ये भी एनालाइज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आया है, उसको मिनिमम टाइम में अगर हमको कंप्लीट करना है तो कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि लॉट ऑफ कंप्यूटर वर्क, लॉट ऑफ सेम थिंग्स क्रिएटिंग, बार बार एक ही क्लाइंट के लिए वही बार बार रिपीट करना, आपको कभी ऐसा लगा कि यार 10 साल से वही चीज कर रही हूँ, बहुत बोर हो गई हूँ? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक ही में ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे मुझे काफी सारे डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यस, ऑब्वियसली अगर मैं सीरियल और वेब सीरीज और उस तरह के प्रोजेक्ट्स करती तो मुझे ऑब्वियसली ये इसका ज्यादा ये मुझे ज्यादा फील होता। लेकिन मेरा जिस तरह का काम है, मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर इंडिविजुअल स्टोरीज को एनिमेशन में 1 मिनट या 2 मिनट का जो स्टोरीज रहते हैं उसमें मैं ज्यादा काम करती हूँ। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि 2D एनिमेशन मतलब इतनी वेब सीरीज बनती हैं, इतने सारे टीवी सीरीज बनती हैं, हमें भी उसमें करना चाहिए। बट यस, ये आपने जैसे बोला, ये रिपीट काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आर्टिस्ट के लिए, जिसको अलग अलग काम करने की भूख हो। मंसूर, यू हैव एनी क्वेश्चन? कृष्णा जी, और एक चीज, अभी फिलहाल के लिए अभी जितने भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे व्यूअर्स, वो जानना चाहते हैं कि उनको डिजाइनिंग एनिमेशन फील्ड में जाना है या खुद का एक फर्म खोलना है, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि आप ये मत सोचो कि आपको स्केचिंग आता है या आपको पेंटिंग आता है तो आप एनिमेशन आर्टिस्ट बन सकते हो, या फिर आप ये मत सोचो कि आपको कुछ टूल्स यूज करना आता है तो आपको एनिमेशन आता है। आपको कहीं पे भी कोई भी फील्ड में जाना है, पहले अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी जो एबिलिटीज है, अपनी जो स्किल्स है, वो पकड़ो कि मुझे कौन सी चीज बहुत पसंद है। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अगर सालों भर तक काम करते हैं, लाइक बहुत साल तक काम करते हैं, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो आप थक जाओगे, आप रिपीट चले जाओ। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड देखा था जब मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे स्टडी करती थी मैक में, वहाँ पे 90% स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो 3 साल का कोर्स होता है, वो 1 साल में ही थक जाते थे, वो ड्रॉप कर देते थे। ओके। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। जब वो एनिमेशन में जाते हैं उसको लगता है कि मुझे स्केचिंग आता है तो मैं ये कर सकता हूँ। इट इज आर्ट एंड साइंस, इट इज नॉट ओनली आर्ट। सो अगर आपको एनिमेशन फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली मैं इससे भी पहले मैं एक सजेस्ट करूंगी कि आप ये कोई टेस्ट होता है जहाँ पे आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है, वो भी काफी सारे टेस्ट कर सकते हो वहाँ, वो भी आप टेस्ट करवा सकते हो। प्लस आपको खुद को इंटरेस्ट तो पता ही, दुनिया से भी हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते, तो वो पहले पक्का करो कि आपको सच में ये चीज पसंद है क्या नहीं। तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि अगर आप काफी लोग होते हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं होता है और अंदर जाते हैं, फिर वो क्योंकि एनिमेशन में बहुत सारी चीजें होती है, आप एक डिपार्टमेंट को पकड़ के आपको उस पाथ पे जाने से भी आपको फायदा होता है। लाइक अगर आपको सिर्फ स्केचिंग आता है तो स्केचिंग आर्टिस्ट की भी जरूरत रहती है एनिमेशन स्टूडियोज में। आप प्रैक्टिस और फिर आप एक दिन अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। सो ये भी एक ऑप्शन है अगर आपको उस तरह से भी आपको जाना है तो। बट मैं ये बोलती हूँ, पहले अपने आप को पूछ लो, अपने आप को शांति से पूछ लो कि क्या सच में आपको यहाँ पे आपका पूरा करियर देना है। लाइक आप इतना क्योंकि हर चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपको अंदर से इच्छा नहीं है तो आप थक जाओगे।
Okay. Yeah. That is very insightful. बिकॉज मुझे भी मुझे हमेशा ये लगता है कि काफी सारे आर्टिस्ट हमारे पास जब जॉब के लिए भी आते हैं, उन्होंने कोर्स किया होता है, लेकिन जब उनको हम रखते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि डेप्थ क्या है, फील्ड का डेप्थ क्या है। वो डेप्थ कब आता है जब को आपको इंटरेस्ट हो। मैं यही बोल रही थी कि जब आपको इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज में, तो फिर आप कितने भी कोर्सेज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फिर एक डिपार्टमेंट में एक जगह पे सेट कर दिया जाएगा। अगर आपको काफी सारे डिग्रीज लेके रखे हैं तो आपको कोई भी हायर कर लेगा एक जगह पे, वो आर्टिस्ट की तरह आपको अगर डेवलप करना है अपने आप को, तो आपको काफी सारी चीजों को देखना है। कृष्णा जी, आप सुन पा रहे हैं? यस, मैं सुन पा रही हूँ। पता नहीं ये कैमरा को क्या इशू है, बट यस मैं सुन पा रही हूँ आपको। थैंक यू कृष्णा जी, आपने हमको इतना समय दिया इतने बिजी स्केड्यूल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। एंड मंसूर तो एनिमेशन करने वाला है अभी, है ना? मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए। सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और ये बहुत अच्छी सीख दी हम लोग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी ही करो और पुट इन द हार्ड वर्क। Yes. Practice. And yes, practice as well. Yes. Thank you so much. Thank you, Ankita. Thank you, Mansoor. Thank you, sir. Thank you. Stay connected. Krishna, stay connected. Yeah. So we come with another session. I just want to share something on inspiration. Inspiration can come from anywhere. A verse of poetry, the sight of a bird in flight, or the colors in a sidewalk might all draw your attention. When you draw on these images, incorporating them into your own work, you will give your best. A design is always a collaboration. You build a new ideas every day. None of the work we produce on a day-to-day basis would ever exist without our thoughts, ideas, and visions, which inspire us in the past. We are connected to a larger world, and this feeds our artistic imaginations. So I like Nikita to give a word of thanks and inform the participants about our upcoming coffee conversation. Over to you, Nikita. Thank you people for coming and on our coffee conversations. Thank you, Krishna ji. Thank you, Ankita. Thank you. Thank you, Gaurav. And guys, we'll be seeing you next week, Thursday, 6 p.m. Okay? Sure. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Stay safe. Stay connected. Bye.